Bismillahirrahmanirrahim. So class, today we are going to discuss about the types of rating errors that usually comes while having a performance reviews of performance appraisals. So let's watch a video, and then we will be able to discuss about the types of rating errors and all that stuff. It's appraisal time again, and I have to give each member of my staff a performance appraisal rating. I would really appreciate some advice. Sure, I'd be happy to help. Let's start with Michael. Hi Michael, did you have a good weekend? Yes, I went fishing and had a great time. Oh, I love fishing. Fishing is my life. I caught a beauty. It was a 50-pound trout. Nice. Where did you go fishing? I went to the River Brae. It's my favorite place to fish. Mine too. Michael and I are so similar. We have so much in common. I am a really hard worker and I produce great results because I put in the extra effort needed to get the job done. Michael is just like me. He always goes the extra mile to produce great results. I will give him a rating of 5. Excellent. There are a number of common appraisal errors managers make when doing these reviews. You have made one with Michael. The error you made is called similar to me. This is when we tend to like people who are similar to us. We say, he loves fishing and so do I. So he must work hard, like I do. When someone is similar to us in some way, we tend to project our other characteristics onto them. Wow, I didn't even realize I was doing that. I'll have to sit back and take a really thorough look at Michael and his work to get an accurate appraisal rating. Let's move on to Maria. Maria, I have a problem. Can you help me out? Sure, what is it? I have spent hours working on the monthly statistics and I was about to email the report to the director. Just as I was about to save the file, I accidentally deleted all the data. Can you do anything to retrieve the information I deleted? I was just about to go home, but I'll stay behind to help you. I will find the backup file on the system and restore it for you. You saved my life. Thank you. Maria is great with technology. She is always willing to help. In the past few months, there were times when she made mistakes, but this must have been due to circumstances beyond her control. Because after all, Maria is great with technology. I will give her a rating of 5. Excellent. You have made another error. This one is called the halo and horns effect. This is when we generalize our opinion of a member of staff based on just one or two behaviors that stand out for us. So we see someone as all good, the halo effect. Or we see them as all bad, the horns effect. No one is completely without virtue, or completely without fault. So the appraisal ratings should reflect people's performance for the whole year. You're right. I've only looked at a very select few events when it comes to Maria. I need to focus on both the good and the bad. Let's see who's next. Henry. Hello Henry. Hey, man. How's it hanging? Henry is a hippie. He obviously spends all of his time taking illegal drugs. Most of the time he can't think straight. It affects his work. It won't be long before he makes a mistake so big that it will lose us a client account. He is a liability. An accident waiting to happen. I will give him a rating of 1. Unacceptable. You have made your third error. Stereotyping. When you stereotype someone, you are projecting characteristics onto them, based purely on, for example, the ethnic, social, or gender group to which they belong. As a manager, you need to be self-aware enough to challenge your perceptions of people. Are your opinions based on facts, or are you being selective in the information you are using to judge someone's performance? You are right again, Maggie. I'm impressed that a woman knows so much about this kind of thing. Just kidding.
Anyway, let's move on to Annabelle. I have finished that report and it's ready to be sent to the client. I completed the review you asked me to do earlier. I found some mistakes in the draft contract and corrected them. This saved the company lots of money. That's great. Annabelle is an excellent performer and has exceeded all her targets. I am thinking of giving her a top rating of 5. Excellent. But then again, I gave a top rating to Sarah. Sarah is my star employee and is the best performer in my team. Annabelle is not as good as Sarah. I will give Annabelle a rating of 4. Good. This is error number 4. The contrast effect. This is where you compare one employee against another. You should be comparing employees against their objectives. If you have 2 employees who have exceeded their targets, then you should give them both the top rating. Good point. I'll give Annabelle a 5. Excellent. Let's see, who's next? David. Hi David, have you finished that report yet? What report? The report I gave you on Monday. I asked you to complete it by today. Well, you should have given me some written instructions. How am I supposed to remember all the things you ask me to do? I find it difficult enough trying to fit everything in. You give me too much work to do. And anyway, I don't like writing reports. Okay, that's fine David. I'll find someone else to do it. David never finishes anything on time and is always complaining. He always blames someone or something else for his failures. If I try to tackle his poor performance, he will find something or someone else to blame. Quite frankly, he scares me. I will give him a rating of 3 acceptable. That's central tendency. Managers make this error sometimes by avoiding giving very high or very low ratings. They think it is easier to give everyone a middle grade, so they don't have to tackle poor performance of the low scorers, or deal with requests for pay rises from the high performers. This, however, is just being lazy. You need to take responsibility for giving accurate ratings and feedback to the individual. Otherwise, there would be no point in giving people ratings at all. Yes, you're right. I'll give David a rating of 1. Unsatisfactory. And I'll talk to him about his work ethic and other problems tomorrow. Last up is Andy. Andy, have you spoken to the customer about the complaint we received? Sorry, no. I will call the customer now. Andy, do you have those figures for me? Sorry, no. I will get them for you now. Andy, have you finished that report? Sorry, no. I will start now. Hi Andy. I finished the document you asked for and put it on your desk. I worked really hard on it and have put in a few extra things that you might find useful. I also took the initiative to put together a PowerPoint presentation with the most important data, so that you can show it at the management meeting. Thanks, that's great. Andy really did a great job with the document and PowerPoint last week. I was so impressed at the detail. And the PowerPoint was a really good extra. Andy works hard to go the extra mile. I will give him a rating of 5. Excellent. And there it is, the last error. The primacy and recency effect. First and last impressions are very powerful and may influence people's interpretation of all other behavior. The recency effect is the tendency to remember only the most recent behavior and rate a person's performance for the whole year, based solely on this. You are remembering the good job Andy did recently and are ignoring all the other previous times when he did a bad job. How do you avoid the primacy and recency trap? There are 4 things you can do. Make notes as you observe behavior. Give feedback regularly throughout the year. Have interim reviews. And refer to the notes you have taken throughout the year at the annual review meeting. Thanks Maggie. You have really helped me see how easy it is to make appraisal rating errors. And now I know how to deal with and counteract them. You're welcome.
ओके जी, सो इस वीडियो के अंदर जो है वो आपने देखा है कि डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो उसने बताई हैं कि किस तरीके से जो मैनेजर हैं वो एरर्स करते हैं बग रेटिंग फिर एम्प्लॉयज़। कुछ सिचुएशंस के अंदर जो है वो सिर्फ एक बिहेवियर या एक इंसिडेंट होता है और उसकी बेस पर जो है वो उसकी रेटिंग जो है वो डिफरेंट कर देता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि जिसमें जो है वो एथिकली जो है वो उसको उसमें लाइसेंस आ गई थी जिसकी वजह से जो है वो रेटिंग को चेंज करने जा रहा था। इसी तरह से बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो कि इंटेंशनली जो है वो एरर्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अनइंटेंशनल एरर्स आ जाते हैं। उसमें जो है वो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है और दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जो कि आगे हम जो है वो इसको डिटेल में देखेंगे। सो मकसद आपको बताने का ये था कि डिफरेंट तरह के जो हैं रेटिंग एरर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि ज़्यादातर मैनेजर जो हैं वो इंटेंशनली जो है करते होते हैं और जो दूसरा है वो अनइंटेंशनल होते हैं। अब मैं आपको जो है वो एक मॉडल शो करता हूँ जिसको मॉडल ऑफ क्रिएटर मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें होता क्या है कि हम क्योंकि बिहेवियर्स को ही रेट कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश इस मॉडल के थ्रू ये है कि हम किस तरह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं या प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं उनको हम जो है वो किस तरह से रेटिंग बिहेवियर के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं, जो कि बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक्यूरेट रेटिंग्स में या डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं रेटिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेटिंग एक्यूरेसी आ जाता है। अब इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के एक्यूरेसी की रेटिंग जो है वो ठीक है या नहीं। तो ये ड्राइव कर रही है टुवर्ड्स मोटिवेशन टू प्रोवाइड एक्यूरेट रेटिंग्स। अब जो एक्यूरेट रेटिंग्स की तरफ जो है वो ड्राइव कर रही है और अल्टीमेटली जो है वो रेटिंग बिहेवियर उससे कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस का या नेगेटिव एक्सपीरियंस करेंगे, ये भी मोटिवेशन टुवर्ड्स एक्यूरेट रेटिंग्स की तरफ जा रहा है और अल्टीमेटली जो है वो रेटिंग बिहेवियर बन रहा है। अब थर्ड वन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेटिंग डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो ये नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है जिसमें रेटिंग डिस्टॉर्शन जो आता है और इसमें भी डेफिनेटली बिहेवियर जो है वो और होता है। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो यहाँ पे भी जो है वो बिहेवियर और होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस मॉडल के थ्रू हमें ये पता चल रहा होता है कि रेटर की जो मोटिवेशन है वो किस तरफ ड्राइव कर रही है और हम किस तरह से उसको जो है वो पॉजिटिव साइड पर लेके आ सकते हैं और उसका रेटिंग बिहेवियर जो है वो एक ठीक डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि मेरिट रेज या रिवॉर्ड जो है उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं। फिर हम अवॉइड करते हैं क्रिएटिंग रिटर्न रेकॉर्ड्स। फिर हम इसी तरह से अवॉइड करते हैं कॉन्फ्रंटेशन विद एम्प्लॉयज़। फिर हम प्रमोट अनडिज़ायर्ड एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ द यूनिट। हम जो अनडिज़ायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यूनिट से जो है वो हम प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद मेक मैनेजर लुक गुड टू हिज और हिज सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र होता है उससे हम जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बेहतर तौर पर रिलेशंस बन रहे हैं। फिर इसी तरह से जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, रेटिंग डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो है शॉप के अंदर जा सकते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि हम जो है वी विल टीच अ लेसन। फिर वी विल सेंड अ मैसेज टू एम्प्लॉय। फिर बिल्ड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ केयर परफॉर्मेंस। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि डिप्रेशन की तरफ जा रही होती हैं और उससे जो है वो जो मोरल होता है ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का वो कम हो रहा होता है। फिर डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं इंटेंशनल रेटिंग डिस्टॉर्शन। तो उसमें रिकमेंडेशंस क्या है कि उसमें अगर देखा जाए तो वी हैव रेटर्स जस्टिफाई देयर रेटिंग्स
उसके अंदर जो भी वेट कर रहा होता है वो अपनी जस्टिफिकेशन भी दे रहा होता है कि अगर ये मैंने काम किया है, वो मैंने जो चीज़ है उसकी ये रीज़न्स है। और उसके अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक इंसिडेंट या स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा साल होना चाहिए जिसको उसने कैलकुलेट किया होना चाहिए और उसी की परफॉर्मेंस जो है वो शो होनी चाहिए। फिर है रेटर जस्टिफाई द रेटिंग्स इन अ फेस टू फेस मीटिंग। जब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो फेस टू फेस मीटिंग आपको दिखाई थी किस तरह से होती है, तो उसके अंदर भी जो है वो रेटर जस्टिफाई कर रहा है कि अगर मैंने लाइक सपोज आपको मार्क्स दिए हैं, मतलब लाइक 5 में से अगर 3 दिए हैं या 2.5 दिए हैं या 4 दिए हैं, तो उसको जो है वो वहाँ पे ज़रूरी है कि वो बताए कि इसको जो है वो जस्टिफाई करे कि अगर वो दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। क्योंकि अगर वो उसको सही तरीके से जो है वो रेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। और सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम नहीं होता कि 1 साल के लिए एक आदमी जो है वो चुप करके बैठ जाएगा, बल्कि वो अपने साथ 5 से 10 लोग या उसको जितना भी सर्कल होता है वो उसको भी कोशिश करता है कि वो डिमोटिवेट करे। क्योंकि अगर उसको तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं मिलती तो वो कहता है कि मुझे जो है वो गलत तरीके से जो है मुझे डिमोट कर दिया या मुझे प्रमोशन नहीं दी या मुझे रिवॉर्ड्स नहीं दिए। तो दूसरे लोगों के अंदर भी जो है वो डीमोटिवेशन का प्रॉब्लम होता है अगर वाकई किसी के साथ जो है वो ज्यादती की गई है। तो ये चीज़ जो है उसको भी ऑब्वियसली ज़रूरी है। लेकिन हमें देखना ये है कि हम प्रिवेंट कैसे कर रहे होते हैं रेटिंग डिस्टॉर्शन को थ्रू रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो हमें ये तो हमें पता चल गया कि जो डिस्टॉर्शन है, रेटिंग की जो डिस्टॉर्शन है वो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आ जाते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन हम इस डिस्टॉर्शन को जो है वो रिमूव करते हैं रेटेड की ट्रेनिंग से, क्योंकि हम इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रहे होते हैं और उसको हम उनको बता रहे होते हैं कि आपको जो है वो कौन सी चीज़ कवर करनी है। अब उसमें तो रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ कवर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कवर होनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन की बेस पे जो है वो उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो दे रहा होता है। दूसरी चीज़ जो है वो मोटिवेशन होनी चाहिए, तो वो वाकई इतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो सारे के सारे काम कर सके। थर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करे, ऑब्जर्व करे, रिकॉर्ड करे और एवेलुएट करे परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये 4 के 4 ट्रेड्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं जस्टिफिकेशन के लिए। एंड देन हाउ टू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज़ व्हेन दे रिसीव परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। लेट्स सपोज कि उसके पास इंफॉर्मेशन भी है, मोटिवेशन भी है, उसने आइडेंटिफाई भी किया परफॉर्मेंस को, ऑब्जर्व भी किया, रैकेट भी किया, एवेलुएट किया, लेकिन अगर वो 1-to-1 मीटिंग के अंदर ठीक तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर सका तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंटरेक्शन के जो है वो डिफरेंट तरीके होते हैं, वो आप कभी भी पर्सनल नहीं होते या आप बाइस नहीं होते। क्योंकि अगर आप पर्सनल हो जाते हैं और आप अगर किसी को सज़ा देने के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको बियर करने पड़ेंगे। और वो सिर्फ एक आदमी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बियर नहीं करने पड़ेंगे, वो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। इसी तरह से जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं दैट हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स, इसके अंदर रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं। हम रीजंस दे रहे होते हैं कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। इसी तरह से इंफॉर्मेशन ऑन द अप्रेजल फॉर्म एंड सिस्टम मैकेनिक्स, हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अप्रेजल फॉर्म के अंदर, उससे रिलेटेड और सिस्टम मैकेनिक्स भी बता रहे होते हैं, सारे सिस्टम्स भी बता रहे होते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं है। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि हर इंडिविजुअल जो है वो ये देख रहा होता है कि मुझे क्या चीज़ इस यहाँ से मिल रही है कि जिससे वो मोटिवेट हो। तो इसमें बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रेटिंग्स, उसको बेनिफिट्स बता रहे होते हैं कि अगर आप एक्यूरेट रेटिंग्स बताएंगे या एक्यूरेट रेटिंग्स देंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ हम उसको टूल्स भी दे रहे होते हैं, मीन्स कि हम उसको सॉफ्टवेयर दे रहे होते हैं, स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक्यूरेट रेटिंग्स को। फिर उसके बाद जो है तो हम आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व, रैकेड और एवेलुएट परफॉर्मेंस कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट टू आइडेंटिफाई एंड रैंक जॉब एक्टिविटीज़। हम तरीका कहते हैं कि हमने बेसिकली
जॉब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना और रैंक कैसे करना। फिर इसी तरीके से हम इसमें जो देखते हैं बहुत ही ऑब्जर्व, रैपिड और मेजर परफॉर्मेंस। हम जो है वो तरीका बताते हैं कि हमने चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करना है, उसको रैपिड कैसे करना है और मेजर कैसे करना है परफॉर्मेंस को। और फिर एंड पे जो है हम देखते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज रेटिंग एरर्स। हम ये देख रहे होते हैं कि रेटिंग एरर्स को जो है वो हमने इस तरह से मिनिमाइज किया। Then you have to interact with the employees when they receive performance information. फिर इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हमने जब कंडक्ट कर लिया एक परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू, तो ये हमने कैसे कंडक्ट करना है। मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो बेसिकली उसी से रिलेटेड थी। आपको एक वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि जब इंटरव्यू कर रहे थे तो वो किस तरह से इंटरव्यू कर रहे थे। वो फुली प्रिपेयर थे, वो फॉर्मल थे और वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में फोकस कर रहे थे जिससे कि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन here we also know how to train, counsel and coach. हम जो है वो ये देख रहे होते हैं कि हम दूसरे को ट्रेन कैसे करेंगे, काउंसिल कैसे करेंगे और कोच कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ज़रूरी थी। इसके साथ साथ जो है वो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है तो हम दूसरी नई चीज़ें जो हैं वो देख रहे होंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड। तो उसके अंदर जो है वो हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।